Hello, dear members. Today I have come to present before you the details regarding the mock board which we are planning to conduct on 1st February 2026 for CBSE, class 10th, 12th Science and 12th Commerce. So I'll give you a brief up of this mock board which we are planning. Now this mock board we are planning under the banner of Educators Federation, where we'll be conducting this mock board across Delhi, and based on the number of institutes we will hire schools as the centers. Now why do we need this mock board or this activity? That is what basically, why is this necessary, why we need to act now. As you all know, the competition has increased after COVID, and slowly edtech firms came into the picture, and situation is, you all know very well, it is very much different. And to match the big companies we need to come together and present ourselves as a big brand under the federation. So that is what we are planning. And you might be knowing Maharashtra, Gujarat, they already have a big federation under which institutes operate, and they have gained in terms of number of students branding to fight the big brand. If you talk of Maharashtra and Gujarat, you will see there are many institutes who are fighting big ones, and big ones are not successful there. For example, search for Bothra classes, Bakliwal classes in Pune, Bothra classes in Gujarat, will get to know. Now, this will be a Delhi-wide initiative, common mock board conducted across Delhi on 1st Feb, on single day. Now, it will be a real Cbse exam with complete module or the pattern as done in Cbse. So that is what we will be doing, and since we are doing it in a very short span of time, it will be just one subject and one single one, because we don't have much time left. And if this is successful, then we'll be doing many more activities. So for class 10th we are planning mathematics, for class 12th accountancy, because everybody has, and class 12th science, physics. So these are the three subjects which we have chosen to conduct on that very day. On 1st Feb we'll be conducting, and by 8th Feb the copies would be checked and returned back to students with complete analysis. Now, official admit cards. So they would get official admit card like board exam. OMR आंसर शीट, जैसे आजकल सीबीएसई बोर्ड में OMR आंसर शीट आती है, सेम पैटर्न. देन प्रॉपर इन्विजिलेटर्स, राइट. Then large exam centers. For class 10th it is beneficial because they will be facing board for the first time. So the third party checking, third party centers, so they'll get a real feel, because when they write in their school or your coaching center, they become familiar. So when they go to some unfamiliar situation on the very first day, that anxiety should reduce. So that is what we are planning. And then a complete performance analysis of all the students who take part. We'll rank them. We'll try to come out with analysis where students faltered, which topic, and this everything, so that we give them a complete analysis, right? And this will be AI powered. Next, why institute should participate? First, you give a professional board exposure. See, all coaching institutes do take exam in their centers, but that atmosphere cannot be given. Some take part in schools, but you know, again the numbers are limited. So imagine a center with say 500, 800 students, parents coming in, buzzing in, something is happening, the banners of Educators Federation, participating institutes. So what it gives you a feel, and it's just one particular day. So for example, your institute is in Rohini and you have to travel, student has to travel 3 kilometers, that will only be for a particular day. So 10:30 to 1:30 exam, report by 9:30, you will not be allowed after 10 o'clock, 10:15 reading time. So you know, you are giving them the complete exposure in the real time practice, and this is what we are. Then it's led by federation, a bigger body. Enhanced satisfaction, academic credibility, the papers would be set by a committee of teachers, experts, reviewed, error-free papers, solution would be given to the students. So what happens is something very professional like a board exam, and we'll also try to involve some leading newspapers to highlight this, that something like this was conducted.
a board before the real board. So that is what each institute would get. So across Delhi you would be branded and you will get a exposure. Now obviously collective branding advantage would be there, enhanced visibility. So maybe in your area all institutes are not participating, so those who are participating, they get this. Then the social media coverage would be done extensively. The parents' confidence would be there when they see this kind of being conducted in a very professional way. And collective branding, so it would be say 50, 100 institutes under federation coming together and doing it. So that will definitely give you a bigger exposure and name. Now you all know that when we come together it becomes a strength. Single person cannot do anything. So say 100 odd institutes, 4,000 students under one platform, everybody is talking. So later on we can have lot of things under federation where institutes can gain. Admission time is coming in March. So what happens is you gain a lot. You get entry to schools, some competitions happening there, quiz happening, or career fairs happening. We can organize something, many things under banner. And then say Times of India can come to collaborate with us. They do events. So if numbers are bigger, then we get a much bigger exposure and this. And we can find any big, fight any big giant institutes also. Now your role as a member, we would be rolling out Google form. You can register your institute there, share students numbers. So for example, class 10th you have 50 students, 12th science, 12th commerce, how many are there? Then you need to encourage the participation. Then see, there are two options. One is you charge 200 from a student. One institute doesn't want to charge, it gives कि मैं दे देता हूँ और मेरे बच्चों को exposure मिलेगा. Third, basically what we are looking is कि अगर हमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं विच वी आर वर्किंग, तो हो सकता है हम बच्चों से चार्ज नहीं करें हमारे मेंबर इंस्टीट्यूट्स के लिए. दैट इज ऑल्सो देयर. फोर्थ, कई इंस्टीट्यूट्स हैव कम अप कि हमें अपनी वहाँ ब्रांडिंग करने देना, हम 5,000 10,000 देंगे. सो दिस वीक वंस गूगल फॉर्म इज देयर बाय 11th January विल फाइनलाइज दिस एंड बाय 12-13 विल लेट यू नो कि कहाँ सेंटर है, क्या क्या होगा, कहाँ हम सेंटर डालेंगे और आपके स्टूडेंट्स आ सकते हैं. और फिर हम जो मेंबर इंस्टीट्यूट्स अपने ब्रांडिंग करना चाहते हैं वहाँ उनसे जो अमाउंट आएगा, हो सकता है उसके बाद हम बहुत कम करें और स्टूडेंट्स को प्राइस देंगे जो अच्छा करेंगे, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को देंगे. सो दैट इज़ व्हाट विल बी डे. वी मे इंक्रीज द प्राइजेज ऑल्सो. पब्लिशर से बात चल रही है, तो जितना बड़ा नंबर हमारे पास आएगा हम उसको करेंगे. एंड 200 रुपीज़ में हम क्या क्या दे रहे हैं, अगर हम चार्ज भी सपोज करते हैं, कंप्लीट आंसर शीट्स, उनके सोल्यूशन, क्वेश्चन पेपर्स और कंप्लीट एनालिसिस, एक पूरा एटमॉस्फेयर, इन्विजिलेटर्स, एडमिट कार्ड, सब मिलेगा. और हम ये भी कह रहे हैं स्पॉन्सर्स, आप लोग भी बात कर सकते हैं स्पॉन्सर्स को. वहाँ भी हम मेन स्पॉन्सर को पूरी ब्रांडिंग और वो देंगे, सब स्पॉन्सर्स देंगे. हमारे क्वेश्चन पेपर्स में बैक पेज खाली रहेगा और उसमें उनके नाम प्रिंट होंगे जो भी पार्टिसिपेटिंग हैं इंस्टीट्यूट्स या स्पॉन्सर्स उनके. और दूसरा हम आंसर शीट्स में भी प्रिंट करेंगे जो सोल्यूशन होगा. तो देयर इज अ वाइडर ब्रांडिंग एंड एक्सपोजर विच विल गिव. सो यू शुड कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव बिकॉज इट इज़ फॉर अस. किसी एक के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म सोचना है, आगे के लिए काम कम हो रहा है, हाउ वी कैन इंक्रीज इट. सो दिस इज ऑल अबाउट. आप लोग सोचिए एंड थिंक एंड कम, लेट्स ट्राई इट. एक बार हम करेंगे तो फिर है आइदर वी वेक अप नाउ और वी गिव अप. ये कलेक्टिव अपॉर्चुनिटी है. या तो हम सब आके अपने को रजिस्टर करें और ये देखें कि हाँ हमें मॉक बोर्ड दिल्ली में करके दिखाना है, एक बज़ है. एंड इतना है कि गवर्नमेंट भी सुनेगी कि भाई ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो समथिंग विच वी कैन डू. लेटर ऑन हम गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हम ऐसे एग्जाम्स कराते हैं और इसमें आप भी बच्चे भेज सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू. वी कैन डू इट फॉर CUET. अगर ये सक्सेसफुल हो गया, हम CUET के लिए पूरे दिल्ली में सेंटर्स करके एक एग्ज़ाम करा सकते हैं. लेटर ऑन फिर JEE के लिए सोच सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स बुक करके. जस्ट बिगिनिंग है. एक बार सक्सेसफुल हो गया बहुत है. 30-40 इंस्टीट्यूट 50 भी अगर मिल गए तो हम इसको कर पाएंगे. और अगर हम सोचते रहे तो हम सोचते ही रह जाएंगे. कहीं ना कहीं स्टार्ट लेना पड़ेगा.
एवरीबडी हु हैज ग्रोन बिग स्टार्टेड समवेयर स्मॉल। आप खुद देखिए, आप भी डे वन 500 या 400 या 300 बच्चे नहीं पढ़ा रहे थे। तो आज आप अगर अपने से ऊपर उठ के लॉन्ग टर्म विजन देख के आएंगे तो हमारी एक स्ट्रेंथ बनेगी और पूरी दिल्ली में एक एसोसिएशन ऐसी होगी जो हमारे कॉजेस के लिए फाइट कर सकती है। अब ये आप पे छोड़ता हूं कि आपको आना है या इस अवसर अपॉर्चुनिटी को जाने देना है, क्योंकि उसके बाद ऐसा इनिशिएटिव अगर हम नहीं ले रहे तो फिर बोलना बेकार है कि फेडरेशन क्या करती है क्या नहीं। और अमाउंट ऐसा कोई एग्जॉर्बिटेंट नहीं है जो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सके। अगर कोई स्पॉन्सर नहीं भी आता तो आपको आगे आना चाहिए कि 200 रुपये है पर स्टूडेंट, चाहे मैं दे दूं चाहे बच्चों से लेना है ठीक है, जो दे दे ठीक है, किसी भी तरह इसको सक्सेसफुल बनाइए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम साइनिंग ऑफ एंड दिस इज वॉट आई कैन से कि नाउ इट्स ऑल अप टू यू, जैसे आपको करना है। थैंक यू एंड लेट्स सी एंड होपिंग for all the best. This is Keshav Agarwal signing off. Thank you.